Okay. So good evening again, all of you. We will discuss the questions of test 1. Hope you have got your scores and feedbacks. ସମସ୍ତେ ପାଇ ଯାଇଥିବ କ'ଣ feedback ଆସିଛି mark କେମିତି ଆସିଛି. So first before going to the discussion per se, let me tell few things that I hope after writing test 1 you have realized what you need to improve. Okay, that is important. Whether you are lacking in time, whether you are lacking in content, okay, you should know. Second thing, another thing you might have realized that it is not important that how much you know. केते जानिछो सेटा important नहीं. It is important how you are putting whatever you know into the paper within that limited frame of time. Okay, सेटा important. Third thing, just mere knowing of informations or concepts are not important. You have to arrange the concept or idea according to the question asked. I don't bother how much you know about the separation of power. Okay, but I am concerned about that whether you know how judiciary plays a crucial role in maintaining the separation of power. मते सेटा दरकार तमे सेटा लिखि पारछो ना नहीं, that I am interested in. Okay, so answer writing is a process which takes time to develop. First of initially you make mistakes, you get less marks, you get frustrated that I am not able to write. Okay, but those things are okay. जो माने लेखि जंती पाइगी जंती से माने भी ए स्टेज रे थिले. Go and watch the interview of rank 9 Chinmay Kumar Padi. His first test mark was 41 out of 135. ठीक अछि. So don't get demotivated. So before going to the answer writing part, तो first आज initially we discuss करिवी answer केमति लिखियर अछि. तापर किछि क्वेश्चन डिस्कशन करिया. Okay, because you know that you should know that हमहु गोटे क्वेश्चन रे इनपुट केम दवार अछि, आइडिया को केमति कोहेरेंट अरेंज करार अछि, these things you should know. अच्छा, let me take you to the answer sheets. Okay, answer sheets of rankers सेतरे मार्क मिलिबन. हमरो समस्तकर इंप्रेशन ये तो एग्जामिनर्स आर नो डिफरेंट. ओके, ठीक अछि. देखो, basic instructions before answering any question. First thing, read the question very carefully. Okay, काहेकि बुझा दरकार, काहेकि ना you have to know how many parts of questions are there. गोटे क्वेश्चन केतेरा पार्ट हमु पचरछि and address each part of the question. Introduction and conclusion तमे लिखि होई जेंति हेले. Okay, address each part of the question. Okay, से हैबिट टा एबेटू करो जेमति कि एग्जाम रे सेम जिंस रिफ्लेक्ट हो.
आउ से हैबिट टा बने पे सबुठु बेस्ट वे होउची सेही स्ट्रेस टा फील करे जोटा एग्जाम में तमे जाई फील करियो अल्टीमेटली ओके ठीक अछि विल रीड द क्वेश्चन नंबर 1 एंड देन विल एनालाइज कि कोन लिखिबार अछि केमते लिखिबार अछि ओके क्वेश्चन नंबर 1A explain the concept of a living document for the Indian constitution. How has the judiciary, through the basic structure doctrine, ensured balance between parliamentary sovereignty and constitutional supremacy? बहुत ही analytical question. First, you have to explain the concept of living document. First part of the question. Second, role roila कार judiciary through what? Through basic structure doctrine, ensure balance between two ideas: constitutional supremacy versus parliamentary sovereignty. Okay, this is the gist of the question. Okay, so amu question frame answer frame कर idea कौन? First which introduction, then how it is a living document, third how judiciary, what is basic structure doctrine, and how judiciary maintains balance between constitutional supremacy versus parliamentary sovereignty, and fourth is conclusion. These are the four parts of the question. Accordingly, you have to answer. Okay. तो इंट्रोडक्शन रे जी जहाँ भी लिखी चो ठीक अच्छे जी जहाँ भी लिखी चो एनीबॉडी इस शेयर कर परियो जने दे जन कौन लिखी चो इंट्रोडक्शन रे एबे एबे पचार जी नेक्स्ट फर्दर डिस्कशन आप पचारिन तुम इंट्रोडक्शन कौन लिखी चो एनीबॉडी प्लीज शेयर Sir, according to D.Y. Chandrachud, the former Chief Justice of India stated that basic structure of doctrine is the north star of Indian democracy. ओके ठीक अछि अच्छा D.Y. चंद्रचूड़ आ गोटे कथा भी कहितले जानछो ना सर नॉर्थ स्टार कहितले आ कोन कहितले हम कहबी ओके ए डिस्कशन में कहबी ठीक अछि आउ के को With over 100 amendments in the Indian Constitution since 1950, the latest being the 106th Constitutional Amendment, which reserves one-third of the seats in Lok Sabha and state assemblies, it has time and again proved that it evolves with changing social values and circumstances like a living document. ठीक अछि बट यू हैव टू एंश्योर कि बेसी लेंदी जेमति न हो ठीक अछि ठीक अछि आ के कहबो ठीक अछि मु कहू कोन लिखियो तमे अलगा किछ लिखि परियो बट आई विल सजेस्ट समथिंग कि से देखो हमर ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर मिस्टर जवाहरलाल नेहरू से कहितले during the introduction of the constitution कहितले कि it is not meant to be static. It is not meant to be static. It is something that it has to be something dynamic in it. Our constitution is not meant to be static. It has to be something dynamic in it. Dynamic kahi rahebo? The dynamism should take the cognizance of the dynamic nature of Indian social and political system. केते बढ़िया कथा कहितले माने आउथरे कोच you can write this statement. The Jawaharlal Nehru said that constitution is not meant to be static. It has to be something dynamic in it. The dynamism should take cognizance of the ever evolving or changing nature of the Indian social and political system or modern conditions. So these are the brief idea of Jawaharlal Nehru regarding how the Indian constitution should be. ठीक अछि नुवा जिनसरा जानला you can put this okay sorry how
how this is a living document. Okay, introduction हे गला टिके स्लो डिस्कशन करछि आजी, otherwise I will write in my iPad तमे लिखियो फर्स्ट क्लास इतमे धीरे धीरे डिस्कशन करछि. So how this is a living document? First, it is a blend of rigidity and flexibility. लक्षण के अंदर लिखा है डायरेक्ट लाइन. ठीक है जी, blend of rigidity and flexibility. Okay, ठीक है जी. The rigidity concept from USA and flexibility concept from UK. ठीक है जी. Okay, ता माने एग्जांपल भी दबा खाली कह देता हो नहीं एग्जांपल. Okay, example our constitutional amendment. The constitution can be amended by two ways: by Article 368 or by ordinary legislation. This is an example of rigidity. This is an example of flexibility. Okay, and when the constitution is amended by Article 368, again there is a caveat. It can be amended by, all of you know, special majority or special majority plus ratification by half of the state. Okay, point number one. So you justified how it is the blend of rigidity and flexibility. Okay, second point. Ever expanding question पढ़ी, ever expanding scope of Article 21. Okay, ever expanding scope of ever expanding scope of ever expanding point लिख दो, example से जीवो, ever expanding judicial dynamism. Example होची the expansion of Article 21A over the years by various judicial pronouncements. तो judicial dynamism का धीरे धीरे इवॉल्व हो ही जाउची. ओके, एग्जांपल राइट टू लाइफ, पर्सनल लिबर्टी, बहुत जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट रे एक्सपेंड हो जाउची. ठीक अछि. अच्छा, देन थर्ड पॉइंट इज responsive to changing first political need. Okay, responsive to changing political need. मते कुह को political need रे एठी ही तमरा थॉट प्रोसेस टा काम करियो. को political need रे constitution change हिज. Emergency, sir. 1975 emergency for it. ठीक अछि. 42nd amendment act 19. हां ठीक अछि. गुड बस 1975 इमरजेंसी परे चेंज होला. ठीक अछि. ओके, जुडिशियल रिव्यू को इंपोर्टेंस दियाला. ठीक अछि. आउ को हला सर आर्टिकल 370 एब्रोगेट है. 10th schedule, anti-defection law. Anti-defection law for curbing the IRM Gayaram culture. ठीक है. Second, changing social need. कौन social need पाइन constitution evolve हिज, constitution change हिज. First constitutional amendment. कोटा First constitutional amendment, sir. फास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. अच्छा ठीक अछि. तापर आउ कोन
Sir, Kodapre? 44th Amendment. Right to education. Koda? Right to 40, education. Right to education, excellent. Right to education. How kono? sir, 44th Constitution में Amendment. हाँ 44th Amendment, Fundamental Duties. 44th amendment ठीक अछि बट फंडामेंटल ड्यूटी अच्छा ठीक अछि आउ कोन जणे एबे कहिले आगुरु वुमेन रिजर्वेशन वुमेन रिजर्वेशन नेक्स्ट गोटे जुगान्तकारी पदक्षेप ओके पाथ ब्रेकिंग स्टेप आउ कोन पैसा ऐसा ठीक अछि आउ कोन ठीक जोटा कि Triple एग्जाम talaq खुश ban. लागियो The ban on triple talaq. एटा कोन So को केस fundamental हेतला हां को केस हेतला Arun Sanva case. Aruna Samba. Aruna Samba case. Supreme Court allowed passive euthanasia for terminally ill patients. Then ban on what? कौन ban हैला? So Sairabano case. ट्रिपल तलाक ban हैला. ठीक अछि. Recognition of third gender. These are some important things that evolved during the change of the society. Society ए जिनसडा को डिमांड कला सेतेबेले कॉन्स्टिट्यूशन ए जिनसडा को अकोमोडेट कला. ठीक अछि. अच्छा. देन पॉलिटिकल नीड गला, सोशल नीड गला, इकोनॉमिक नीड. आसो एग्जांपल कोठी एम तुम पाइबोनी लेखा हितबो एम बट तुमको खाता रे एम लिखियो पड़ियो को इकोनॉमिक नीड रे कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व हेची. So 91 Constitutional Amendment Act 2003 FRBM. एफआरबी अच्छा ठीक अछि. ओके नेक्स्ट आउ So कोन 101 Constitutional Amendment Act GST reform. हां जीएसटी ठीक अछि. आउ कोन जीएसटी एफआरबीएम तापरे आउ कोन डायरेक्टिव प्रिंसिपल रे कोन अछि आर्टिकल 39 कोन आर्टिकल 42 कोन आर्टिकल 39 to force her. adequate means of livelihood So equal period for both men and women. women 42 कोन just and human condition of work. Sir, Olga Telis case. Excellent. Okay, just and human condition of work एथरे कोन होछि वर्क प्लेस रे कोन प्रोवाइड कराउछि पिला मन पई क्रेज प्रोवाइड कराउछि. ओके सेफ्टी प्रोवाइड कराउछि वुमेन मानक पई सेफ्टी प्रोवाइड कराउछि. ओके से मानक पई बेसिक नेसेसिटीज. ओके फिक्स्ड वर्किंग आवर्स ताटो अधिक काम तमे करि परिबोनी. That is only because of this article 42 just and human conditions of work. Sir, IR Koela versus State of Tamil Nadu case है पर होगी. हे परिबो कहीं 47 कोन what is 47 raising nutritional standard of living. Okay that is raising nutrition and standard of living. सेतरा हम कोन डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम हम इंप्लीमेंट करछे. ओके जदि those are not directly related but these are certain social, political and economic changes which has brought the changes in the constitution. सेति में हम कहया constitution is a living document. ठीक अछि. This is the whole justification behind why you are telling the constitution as a living document. Okay, then comes second part of the question is significance of basic structure doctrine and how the judiciary is maintaining the balance. जब तुम significance heading दिला BSD then you know the keyword. The keyword is 1973
Test-1 on Bharati case. You all know. Tako likha darkar nahi. Because the basic structure doctrine came into existence after major few evolved after many judicial pronouncements, and ultimately it took the final shape in the case one of the Bharati case 1973. Okay, and is evolving till date. The basic structure doctrine to say it is for real, तापर evolve maybe होज. Okay, तो आमे देखिबा how the judiciary is maintaining the balance between constitutional supremacy versus parliamentary sovereignty. ठीक अछि. तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कौन करे माने एमदी नहीं कि हमें एटा कंपैरिजन कर लिखियो पॉइंट लिखियो कि हाउ इट प्रमोट्स बैलेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी एंड पार्लियामेंटरी सोवरेनिटी. द फर्स्ट पॉइंट हमें लिखियो कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन प्रमोट्स द कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियाज. आगे ना बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ट्राई टू प्रोटेक्ट द बेसिक एडिफिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो सेति भाई जहां भी कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियल अछि सेक्युलरिज्म हैला justice हैला all these are part of basic structures. Free and fair elections. ठीक अछि. अच्छा, then second, the basic structure doctrine prevents the temporary abuse of the constitution by a temporary majority government. गोटे गवर्नमेंट टेम्पररी टाइम पे जदी मेजॉरिटी रहिला जेमिति कि से गवर्नमेंटटा बेसिक स्ट्रक्चर को अब्यूज करि पर कॉन्स्टिट्यूशन को अब्यूज करि परिबोनी सेटा को बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन एंश्योर करे. ठीक अछि. पॉइंट नंबर 2. ओके. थर्ड लिखु था द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन promotes the separation of power. You are interlinking the concept. Separation of power सहित आकु लिंक करूछ. Because separation of power is also a basic structure. Okay, separation of power is a basic structure. ठीक अछि. And can get a basic structure because that promotes balance between legislative and judiciary. Okay, acha. Then fourth point, it promotes the fundamental rights against the tyranny of the majority or against the arbitrariness of the legislature or executive. Promotes fundamental right against the arbitrariness of the legislature or executive. ठीक अछि. अच्छा, then आमे खाली कहबा कि पार्लियामेंट आमे कोन कहले these points all are in negative connotations. ठीक अछि. आमे पार्लियामेंट इंटरफेयर करि परिबोनी फंडामेंटल राइट टेक करि परिबोनी को डोमेन को सेपरेशन पावर मेंटेन कर रहबो कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियल प्रमोट कर रहबो टेम्पररी मेजॉरिटी गवर्नमेंट आसले भी कॉन्स्टिट्यूशन रो बेसिक एडिफिस को अल्टर करि परिबोनी. These are all negative connotations. किछि पॉजिटिव तो रहबा दरकार ना. बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन also upholds the parliamentary role in accommodating the socio-economic changes. जेमति आमे कहले ट्रिपल तलाक ban हला. ठीक अछि. किंबा वुमेन रिजर्वेशन हला. तो सोशियो-इकोनॉमिक डिमांड को आखिर रखी जदि पार्लियामेंट वुमेन रिजर्वेशन पई बिल नै के आसुची that is also good. That means the basic structure doctrine accommodates the parliament's authority in accommodating the socio-economic changes. ठीक अछि. अच्छा, आउ this is the point number 5. Then point number 6. 6 number point कोन basic structure doctrine it guides and gives the directions to the interpreters of the constitution. So these are the points how the basic structure doctrine काहेना क्वेश्चन पचारछि कोन पार्लियामेंटरी सोवरेनिटी भी केमती प्रोटेक्ट को बैलेंस करूची बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आमे कहि परिबनी कि केवल कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी को प्रमोट करूची
आमे कह yes it also promote parliamentary sovereignty. So आमे कौन लिखिले आमे कहले कि it accommodates the parliament's authority to respond to the changing socio-economic, cultural, political needs. Jarich. ठीक अछि पार्लियामेंट अथॉरिटी सेठी अछि सेटा को बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन डिनाय करू नाही जदियो क्रिटिसिज्म ए क्वेश्चन रे पचारि नाही बट लेट अस डिस्कस सम क्रिटिसिज्म्स ओके first thing okay first thing of basic structure is the vagueness kahinki because the terms mentioned in the basic structure these are not clearly defined anywhere okay these are vague not clearly defined ठीक है the basic structure doctrine gives room to the phenomenon called as judicial overreach. Give an example, the NJAC 2014. Okay? The NJAC 2014 was declared null and void by the Supreme Court. Okay? Third, CJI Chandrachud कौन कहते पहले जे basic structure is the north star of the Indian Constitution. ठीक है guiding light. But again, he also told the same thing that the basic structure doctrine cannot be, or other way you can say, validity of an ordinary law. Write down the statement. Validity of an ordinary law cannot be challenged on the ground of violating the basic structure doctrine. Okay? तामाने basic structure doctrine रो जदि गोटे ordinary law basic structure doctrine को violate करूची that validity cannot be challenged applying the basic structure doctrine काहे कि से कहले basic structure doctrine जते बेले constitutional amendment हबो सेते बेले तमे कहबो basic structure doctrine आसला okay basic structure doctrine apply to the constitutional amendments काहे कि से कोन कहले से कहले देखो basic structure doctrine एमती टर्म अछि जेमती कि बहुत बडा टर्म अछि जोडे broad undefined like secularism democracy which can vary according to the situations and context. So when the validity of a constitutional amendment will be challenged, then basic structure doctrine will come into existence. You cannot challenge the validity of an ordinary law citing the reason of violating basic structure because an ordinary law has nothing to do with constitutional amendment. Okay, basic structure doctrine will only apply to the constitutional amendment. D.Y. Chandrachud कहते थे, ठीक है? Just before he retired, okay, there was an article. ठीक है? So the मर हे गला basic structure doctrine ऊपर हमारा clear idea पड़ा इसला. Then what conclusion we will write? Conclusion हमें कौन लिखिया? Conclusion हमें लिखिया कि basic structure doctrine helps to protect the basic edifice of the constitution. You all know, okay? And question concept कौन अछि? Living document. तो से जिनसटा भी constitution चला include माने conclusion में include कर दवा. तो हमें लिखिया basic structure doctrine helps to protect the basic edifice of the constitution and helps to evolve the constitution as a living document. Simple, okay? In response to the changing social, political and economic needs and simultaneously creating a balance between parliamentary sovereignty and constitutional supremacy. Done and dusted. Conclusion लिख पालो? नहीं लिख पालो? Should I repeat? लिख दो.
ठीक अच्छे समस्त लिखिदेल ना किए लिखिन को जे लिखिन को आउथरे कहबी डन ओके ठीक अच्छे क्वेश्चन नंबर 1B सर रिपीट हाँ को अरे मु तो से चाहू छी तमे यदि लिखिन को आउथरे रिपीट करबी देखो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन helps to protect the basic edifice of the constitution ठीक है and helps the constitution evolve as a living document in response to the changing social, economic and political needs. Okay. And simultaneously creating a balance between parliamentary sovereignty and constitutional supremacy. ठीक है? अच्छा. Polity is nothing but play of words. Okay. चलो. Question number 1B is 1935 discussion पर करिया 2A टा डिस्कस करिया ओके concept of separation of power excuse me okay you all know the separation of power was given by philosopher Montesquieu okay Montesquieu and this is Indian model of separation of power the Montesquieu जो separation of power देथिले that was rigid this is the Montesquieu model of separation of power no interaction between the three wings of the government executive legislature and judiciary but what we have in our Indian model of separation of power is a okay interaction of executive legislature judiciary okay interaction is there so 80 typically Montesquieu का model नामे कही परिवा there is no interference ठीक अछि and but एठी कोन influence एठी हमें टर्म यूज करे influence okay influence each other ठीक अछि अच्छा जदि हमको परीक्षा लिखिया पड़े व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर बेसिक डेफिनेशन कौन ओके वन लाइनर की टू लाइनर डेफिनेशन मन रखियो ओके राइट डाउन separation of power is a political theory that advocates for separation of power is a political theory that advocates for division of power between three different organs of the state or government, whatever you can write. That is executive, legislature, and judiciary. Separation of power is a political theory that advocates for division of power between different organs of the state or government, that is executive, legislature, and judiciary. Okay. Question pacharichi. Question pacharichi. The Indian model of separation of power is functional, not structural, and there is fusion of power between the executive and the legislature. Elaborate. How does the judiciary maintain their functional balance? ठीक अछि अच्छा तो एठी हमको एक्सप्लेन करिया पड़िबो जे आमे जो सेपरेशन ऑफ पावर इंडियन मॉडल अछि how that is functional, that is not structural. Structure is सेमती हिनी okay, function is सेमती हिनी okay.
First is Article 50. Article 50 रे कौन है? Constitution कौन कहला? Constitution directed the state to separate executive from the judiciary. Okay, separate executive from the judiciary. Okay, जदि से स्ट्रक्चरल ही थांता ताले पूरा क्लियरली एनफोर्स ही थांता, बट ताको डीपीएसपी रे रखाला. काहे के रखाला डीपीएसपी रे? कारण डीपीएसपी एनफोर्सेबल नुह. ओके, एंड इट इज अप टू द स्टेट केते एक्सटेंड पॉन द सेपरेट ही परिबो सेटा स्टेट देखिबो. ओके, so article 50 is not enforceable, so complete separation of power you cannot expect. तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर माने जानिथिले कि एटा को हमें यदि माने रिजिड कर दवा ताले प्रॉब्लम हे जिवो. सेति में से माने डीपीएसपी रे थोड़ी जन आर्टिकल 50 रे डीपीएसपी रे थोड़ी देले कि काहे कि ना हेटा एनफोर्सेबल नो. स्टेट जेति की एक्सटेंड पन चाहिबो सेति की एक्सटेंड पन सेपरेशन नै परिबो. चलो ठीक अछि. सो आर्टिकल 50 that is included in the DPSP and that is not enforceable. So सेति पे rigid separation of power exist करू नाही इंडिया रे. ओके, अच्छा ठीक अछि. देन आउ कोन आउ फंक्शनल सेपरेशन पावर माने हाउ दैट इज फंक्शनल. कॉन्स्टिट्यूशन जो डोमेन देछि द कॉन्स्टिट्यूशनल functions performed by parliament, performed by legislature and judiciary. कॉन्स्टिट्यूशन समस्त को फंक्शन देछि, पार्लियामेंट को देछि, एग्जीक्यूटिव को देछि, सॉरी एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट को देछि, एग्जीक्यूटिव को देछि एंड जुडिशियरी को देछि. अच्छा, पार्लियामेंट रे फ्रॉम आर्टिकल 107 to 117. ओके, एग्जीक्यूटिव आर्टिकल 53 154. 53 कौन कहला? 53 कहला president will be the executive power of the union will be vested on the president. Article 53 कहला. Article 154 कहला executive power of the state will be vested on the governor. आउ दीटा ब्रांच रे तमे देखिबो ना पार्लियामेंट रे ना जुडिशियर रे सेमती किछि vested power काहा को दिया है कोठी, केवल एग्जीक्यूटिव रे दिया है. आर्टिकल 53 रे कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली लिखिछि द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन विल बी वेस्टेड ऑन द प्रेसिडेंट, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट विल बी वेस्टेड ऑन द गवर्नर. दिस इज नॉट देयर इन द अदर टू ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक अछि. अच्छा, तो जस्ट रिमेंबर द आर्टिकल्स. तो देन जुडिशियरी रे हम देखिले आर्टिकल 124 establishment of Supreme Court and Parliament has the power to fix the number of the judges. केते हबो जज number of judges, Parliament has the power to fix it. ठीक अछि. तो एटा this is the constitutional function कि Parliament रो एई काम करिवो, executive एई काम करिवो and judiciary एई काम करिवो. ओके, and 124 कोन कहउछि जदियो एस्टैब्लिशमेंट सुप्रीम कोर्ट हबो बट पार्लियामेंटर पावर रो जज के जन देबे सेटा पार्लियामेंट डिसाइड करिवो. सो देयर इज ए इंटरेक्शन. ठीक अछि. अच्छा, नेक्स्ट कांसेप्ट हमर क्वेश्चन में पचारछि हाउ दैट देयर इज ए फ्यूजन ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव. Fusion of power between legislature and executive. Okay. So, first thing, you all know that executive is selected from the legislature. And executive is a part of the legislature. And this fusion of power, everything हेनी कि माने से माने निशा खाई कर दिजन जे हां executive टा आर पार्ट हबो बोली. Okay. No, they had a clear thought process. कि नहीं आमे जदी executive को legislature रो नबा we will promote a responsible government. Constitution कौन लिखा है? The executive will be responsible to the parliament in general and the Lok Sabha in particular. ठीक अछि, हमें जानि सेटा. अच्छा, so responsible government promote करिया पे fusion टा अछि and article 75(3)
clause 3 will promote the responsible government. If the executive will be responsible to the parliament in general. ठीक अछि? अच्छा. Then fusion of power केमती अछि? There is something called as delegated legislation. Mane? Although law making is the domain of the legislature, but in case of delegated legislation, the parliament makes the broad framework of the law, and the detailed law is to be drafted by the executive. That means the law making is delegated to the executive. Okay. Then fourth, president gives assent to the bills passed by the legislature. ठीक है? आमे पढ़ले the power of the union executive is vested on the president. Okay, the executive head. किंतु legislature pass कला bill, से ताको sign कले. ठीक है? So there is a fusion of power between legislature and executive. ठीक है? अच्छा. Then next part of the question, that how the judiciary maintains the functional balance. एथरे केते गुडा केस लॉ कहिबी जोटा कि नोट डाउन कर रखियो. ओके. अच्छा. फर्स्ट थिंग, जुडिशियरी केमती बैलेंस रखे दीटा को भितरे. फर्स्ट थिंग होची जुडिशियल रिव्यू. ओके. फर्स्ट थिंग होची जुडिशियल रिव्यू. ओके. सो जुडिशियल रिव्यू कौन करे? To determine the constitutionality and legality of the law. To determine the constitutionality or legality of any law passed by the legislature. Okay. Law ही परे किंबा executive action भी ही परे. खाली law कहीं कोई executive action रे भी ही परे. ठीक है जी? Okay. Second thing. Again, it has a basic structure doctrine. Okay. Basic structure doctrine ensures what? Limited power of parliament to amend the constitution. Limited power of parliament to amend the constitution. कारण basic structure doctrine कला भाई इतनी की जिनसर तो हाथ मारी परिवहन आपको छाड़ी की जहाँ करे था करो. ठीक है जी? अच्छा. Okay. Then third thing is important. एटा केही लेखिनो थिबो लेखो. Third point is filling the legislative vacuum when legislative vacuum for justice without encroaching upon the legislature. बुझे देवी कौन पाई इस लाइन हम कहूची. Filling the legislative vacuum for justice without interfering or encroaching upon the domain of legislature. ठीक है जी? In 1997, example. Okay. अच्छा मते पिला माने को when this act came into existence. कब ऐसा? 2013. 2013. ता पूर्वरु कौन थिला? ता पूर्वरु सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस एड्रेस करिया पे किछि थिला ना किछि नथिला? सर विशाखा गाइडलाइन विशाखा गाइडलाइन थिला. ओके. विशाखा गाइडलाइन केबे हला? 1997.
1997. আচ্ছা এটাও কলা কি Supreme Court judgment. Supreme Court. ইয়েস এটাକୁ সুপ্রিম কোর্ট কলে ঠিক আছে তো বিফোর 2013 there was a legislative vacuum ঠিক ଅଛି କାହିଁକି ନା ଏ ସବଜେକ୍ଟ ଉପରେ କିଛି ଲ ନଥିଲା so 1997 onwards this legislative vacuum was filled by the Supreme Court guideline. Example number 1 that finally evolved into OAS Act 2013. So 1997 ରୁ 2013 পর্যন্ত ए विशाखा गाइडलाइन ही काम करतला तो लेजिस्लेटिव वैक्यूम टाको एड्रेस करा ही थिला. एग्जांपल नंबर 2 एग्जांपल नंबर 2 इज गोटे केस तुम जानिथिबो भेलोर सिटीजन फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के जानछो केसटा कोन भेलोर सिटीजन फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया कोन हेतला ना सेठी भेलोर सिटीजन मान जो थिले सेठी किछि गुडे जो टैनरी थिला टैनरी चमड़ा काम होतला ओके से टैनरी रु कोन बाहर प्लस सब माने पॉल्यूटेड वाटर बाहरतला पॉल्यूटेड वाटर ठीक अछि पॉल्यूटेंट डिस्चार्ज करथले से फैक्ट्री गुडा को सब टैनरी रु पॉल्यूटेड वाटर डिस्चार्ज करथले तो डिस्चार्ज जो करूथले लोक मानकर असुविधा होतला ठीक अछि तो सेते बेले से माने कोन गले उडे केस कले से माने केस कले सुप्रीम कोर्ट discovered or you can say माने coined the आमे जो एबे कहूचे polluter spray principle सुनथिबो सुनजो ना नहीं polluter spray principle एमसी मेहता केस की हां polluter spray principle ओके ओके तो polluter spray principle सुप्रीम कोर्ट से केस है कहितले कि जीए पॉल्यूट करूची पॉल्यूशन करूची सीए पे करिवो ओके एंड आल्सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ओके दोस वेर फ्यू टर्म्स से केस रे सुप्रीम कोर्ट कहितले व्हिच लेटर बिकेम द पार्ट ऑफ इंडियन लॉ ठीक अछि later became part of Indian law. ठीक है तो these are few examples where the legislative vacuum in a certain field has been addressed by the judiciary by framing certain guidelines. ठीक है अच्छा the fourth point आमे थर्ड पॉइंट सरला हमरा fourth point how judiciary maintain a balance पढुचे हमें fourth point due process of law following the due process of law same thing you will know that if the agricultural procedure established by law the gradually that is evolving into due process of law ta mane kon if the action of legislature or executive is arbitrary or it is not fair then that or unjust or unfair that can be declared null or void ठीक अछि तो due process of law follows the principle of fairness of law in its application गोटे लॉ इतला अप्लाई होची सेते बेले that should be fair okay ठीक अछि so these are the ways how judiciary maintains a balance conclusion में कौन लिखिबा तो एटी हम देखिले कि there is a fusion between executive and legislature तो हमें लिखि परिबा although there is a fusion between executive and legislature जदी भी fusion अछि but the tyranny of the majority okay it is not a tyranny of the majority because of independent judiciary
okay, which helps to maintain the functional balance. Okay, functional balance and maintaining functional balance between the executive and the legislature, and maintains and avoids, or you can say the exact term ensures a constitutional government rather than parliamentary or executive supremacy. Although there is a fusion between legislature and executive, however, it is not a tyranny of the majority. जदियो दीटा विंग भितरे फ्यूजन अछि किंतु से माने मेजॉरिटी हेई पारु नाहंती किंबा से माने एमिति किछ करि पारन जोटा कॉन्स्टिट्यूशन अगेंस्ट रे बिकॉज़ ऑफ इंडिपेंडेंट जुडिशियरी. तो से कोन करूची, that helps to maintain the functional balance and ensures the constitutional government rather than legislature or executive supremacy. Okay, legislature किंबा executive supremacy अपेक्षा constitutional form of government को ensure करूछ. This is the conclusion. ठीक अछि? Okay. Sir, last line again. Last line आउथरे कह दीजिए पूरा लाइन टा. Although there is a fusion between legislature and executive, however, it is not a tyranny of the majority because of independent judiciary, which helps to maintain a functional balance and promotes constitutional government rather than legislative or executive supremacy. बुझेला? ठीक अछि. So you already it.